Air pollution. What is air pollution? When our clean air gets mixed with smoke, dirt, and some other harmful substances, then the air gets dirty, and this is called air pollution. बच्चों, जब हमारे क्लीन यानी कि साफ़ सुथरी हवा में कोई भी ऐसी पार्टिकल्स जैसे स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स या फिर हार्मफुल गैसेस आके मिक्स हो जाती हैं तो हमारा एयर क्या होता है, डर्टी हो जाता है और इसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और वो पार्टिकल्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं उसे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। When garbages are burned, they emit a lot of smoke, and this smoke released in the atmosphere makes our air polluted, and this is one of the major cause of air pollution. There are various factories that emit large amount of smoke and fumes, and these smokes and fumes are responsible for air pollution. Smoke released from vehicles such as cars, trucks, trains, and ships also causes air pollution. Forest fire and volcanic eruptions also released smoke, gases, and dust particles in very huge amount, and these particles causes air pollution. So these were the causes of air pollution. What are they? Let us revise. Burning garbages, smokes and fumes released from various factories, fumes or smokes from vehicles, and smoke, gases and dust particles released from forest fires and volcanic eruptions. Ways to reduce air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने के तरीके। Here the first one is avoid burning of crackers, यानी कि हमें पटाखे जलाना कम करना चाहिए जिससे कि स्मोक कम रिलीज हो, and use public transport instead of private vehicles. And the next one is plant more and more trees. बच्चों, जो ट्रीज़ होती हैं वो क्या कहती हैं, डर्टी एयर को एब्जॉर्ब करके और हमें क्लीन और फ्रेश एयर प्रोवाइड करती हैं. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट दे कैन प्यूरिफाई द एयर. We can also use natural source of energy like solar energy and wind energy because these source of energy are very clean and they do not release smoke or any type of dust in the atmosphere. For converting solar energy, we use solar panels, and for converting wind energy, we use solar turbines. पोल्यूशन से बचने के लिए हम फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को रेसिडेंशियल एरिया से दूर बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं उससे दूर फैक्ट्रीज़ को बनाया जाए ताकि फैक्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक लोगों को हार्म ना करे. नाउ वी विल सी द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन आवर हेल्थ. When we breathe in polluted air, it can cause several harmful diseases. Some common diseases are cough, sore throat, nausea, asthma, bronchitis, tuberculosis, and it can also cause several types of skin diseases. और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? We should keep our surroundings clean. हमें अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना होगा. And we should also clean the air and avoid playing in smoky or dusty place, because when we play in a very smoky place, then the smoke or dust enters in our body through our nose and it can cause disease. This is all about this lesson. Thank you.